So my dear friend, once again ngasi matam atinmam lawzarga Care Health Insurance India gi ina number 1 health insurance ki koigi head amaga officer mga minute mga tara talk amdang tongminasi. Let's have a talk. So Ashish ji, once again very thank you for your valuable time and हम सर आपसे चंद 5-10 मिनट बात करना चाहेंगे एज ए पर्सपेक्टिव युवा के तौर पे. सो सर हम आपको भी बेहतरीन तौर पे जानते हैं, आप एक बेहतरीन कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है जो कि देश का नंबर 1 है. और सर पहला सवाल सर आपका एक प्यारा सा इंट्रोडक्शन दीजिए और कंपनी के बारे में भी कुछ बताइए सर. थैंक यू वेरी मच फॉर द अपॉर्चुनिटी व्हाट यू हैव गिवन. देखिए मेरे बारे में एज आई टोल्ड यू माई सेल्फ आशीष दत्ता, वर्किंग एज ए जोनल बिजनेस हेड केयर हेल्थ इंश्योरेंस. I am with the company almost for 9-10 years. I have joined in the year 2015 as branch manager, and from branch manager I gradually grown to zonal business head for Bengal Northeast. So if you talk about care, rather I will prefer to talk about health insurance industry, right? Let me tell you, all this industry हेल्थ इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट इज़ गोइंग लिप्स एंड बाउंड्स. बहुत ज़्यादा डिमांड पे है. पीपल आर लुकिंग फॉर बिकॉज हेल्थ केयर एक्सपेंसेस ग्रोइंग वेरी हाई एवरी डे एज यू नो. बहुत बढ़ रहे हैं हेल्थ केयर एक्सपेंसेस का. सो पीपल नीड हेल्थ इंश्योरेंस टू हैव अ गुड हेल्थ केयर ट्रीटमेंट और व्हाट शुड आई से टू हैव अ प्रॉपर लाइफ. So as a company, in year 2012 we have started with a turnover of 39 crore, and last year we have closed around near to 7,000 crore. We are one of the fastest growing company in the market, and our income card is very much in line. So मेरा आप एक ही चीज़ बोलना है. It's not about care health only. It's a health insurance industry which is growing in a very high pace, and people are looking for health insurance because of high medical inflations. So I think people should, I request all the youth, all the people of Manipur, they should be under health insurance, or they should look into health insurance. They should work for health insurance. That will overall develop our community and our well-being. थैंक यू. यस सर. और सर हम आपसे भी जानना चाहेंगे हेल्थ इंश्योरेंस के साथ जोड़ के एज ए एजेंट, एज ए पार्टनर और एज ए ऑफिसर और एज ए एम्प्लॉई ऑफ द केयर हेल्थ इंश्योरेंस क्या क्या फ़ायदा हो सकता है. व्हाट आर द बेनिफिट्स वी कैन गेट विद द पार्टनरशिप एंड विद द लिंकिंग विद द केयर हेल्थ इंश्योरेंस. थैंक यू. एज आई टोल्ड यू के ओवरऑल हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री growing in double digit, right? So when you are a part of growing industry, तो definitely your growth is inevitable. आप भी growth करोगे and आप भी earning करोगे. सबसे बड़ा चीज़ ये है कि health insurance industry within 10-12 years of time, from 8,000 crore to it has reached to almost 1 lakh crore last year, right? And is going to be 2 lakh crore. Now इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड, ये जो 1 लाख करोड़ का प्रीमियम जंप है जो डेफिनेटली ग्रोथ रेट के हिसाब से आएगा. हर कंपनी, नॉट ओनली केयर, एवरी कंपनी इज़ गोइंग टू एंजॉय देयर ग्रोथ. और उस ग्रोथ के साथ मेरा कोई पार्टनर, लाइक अगर वो केयर में एज ए हेल्थ इंश्योरेंस प्लानर, हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइज़र काम कर रहे हैं, सो डेफिनेटली ये जो बिजनेस फ्लो जो मार्केट से नेचुरली आ रहे हैं, तो डेफिनेटली वी हैव अ कमीशन स्ट्रक्चर फॉर आवर एजेंट्स, सो दे कैन अर्न ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, राइट, इफ दे वर्क प्रॉपरली. एंड दैट डेफिनेटली दिस इज़ अ ग्रेट सर्विस टू द सोसाइटी, बिकॉज एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रेस, मेडिकल डिस्ट्रेस, यू आर हेल्पिंग अ फैमिली फॉर हिज वेलबींग. सो पहला चीज़ एज ए पार्टनर, overall health insurance industry is growing and care is growing fastest, one of the fastest growing health insurance company we have, almost 37% रेट में हम लोग ग्रो कर रहे हैं. So if you are getting associated with us, so you will grow obviously, and definitely as remuneration, as commissions, you are going to earn a huge amount of money. So that will help you to have a good career, and obviously that will help you to grow as health insurance professionals. और सर अभी ये सवाल आ रहा है कि सर हम युवा केयर के साथ कौन से प्रोसेस में क्या करके
और कौन कौन से माध्यम से हम उसमें शामिल हो सकते हैं? बहुत सिंपल है। देखिए, आप IRDA का जो एग्ज़ाम्स होता है हेल्थ इंश्योरेंस का, उसको दे के आप जुड़ सकते हैं। या आप अगर ऑलरेडी किसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी या जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ काम कर रहे हो, तो उसमें भी आप वो जो लाइसेंस है, उसी लाइसेंस के आधार पे यू कैन tag your license with Care Health Insurance and you can work. It's very easy. It's Very easy process. Very easy process. और कोई भी केयर के ऑफिस में आके भी संपर्क कर सकते हैं? एकदम, हम लोगों का ब्रांच है. We have a branch in Imphal, and if you have any query and if you want to join with Care and आपको कोई भी query है, ब्रांच पे आइए. We will definitely support you to join, and let me tell you all again, so this is a very easy process, nothing complicated or difficult. There is two things, either you can join with the exam. एक एग्ज़ाम होता है IRDA का जिसमें 15 मिलने से पास हो जाता है, फिर 50 का एग्ज़ाम है, फुल मार्क्स इज 50, so you need to have 15. And if you have already license, I mean if you are already working as advisor in any health insurance, life insurance company or general insurance company, then you can tag the license with Care Health Insurance. So it's a very easy process. और सर, हम जानना चाहते हैं सर, केयर के साथ जोड़ के कौन कौन से इनकम, कौन कौन से प्राइजेस, कौन कौन से अवार्ड हम पा सकते हैं? See, पहला तो we have fixed commissions given by IRDA. So every year you will have 15% commissions. So मान लीजिए if you are selling a premium of 1 lakh per month. So normally एक health insurance policy 20-30 साल चलता है. So 1 लाख का 15% होता है 15,000. So every year the policy will renewed and you will have 15,000 lifelong, almost 20-30 years. And apart from commissions, organization used to give lot of abroad trips as reward and recognitions, like last time we went to Vietnam, then Almaty, then Singapore, then a lot of places all over the world. So you can enjoy that trip with your commissions, right? And other than this, we give incentives also for a special performance, special percentage. So that is, you have all the things to earn in Care Health Insurance, not an issue. एंड सर, अभी के लिए व्हाट आर द हॉट केक प्राइजेस? कौन कौन से बड़े स्कीम है, जो बड़े अवार्ड है, जो केयर हेल्थ इंश्योरेंस की तरफ से जो डिक्लेयर्ड है? सर, ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग प्राइजेस, रिवॉर्ड के बारे में बताइए। Every quarter we have our contest rewards. Every quarter, every 3 months we have contest for our partners, and right now we have cash carnival, right? So where if you do certain business, you will get certain amount of reward recognitions, right? So अभी आज के डेट में for May, June, July, if you are doing 3 lakhs of business, so you have a contest prize of 15,000. If you are doing 6 lakhs of business, you are getting almost 60,000 of contest prize. After that, if you do 3 lakh more, then every 3 lakhs you are getting 30,000. So it's huge amount of reward and recognition we have, and every quarter we have, not only this quarter. If you are with Care, then every 3 months you will have one reward recognition contest with your commissions. That is addition. And sir, we have a few audience with us, so direct question from Mr. Berlin. Hello sir, I'm Berlin. I'm also one of the agents of Care Health Insurance. Okay, my question is very simple. While working as an agent, the customer frequently asks to me why we choose Care Health Insurance instead of blah blah other insurance. Only 3 basic points. Okay. Okay, this is very simple. Right. So see, let me tell you one thing. See, as I told you earlier also, so basic benefits of health insurance is at the time of hospitalizations or when you require a cost for healthcare treatment. So that time that company should give you a proper claim service, and that time company should give you proper cashless benefits and other benefits. So considering that, let me tell you, in case of Care, right, we have a product called Care Supreme, right? So right now in Indian market, so we offer 600% bonus.
So that is one of the point. Why? Because as you know, in case of medical inflation, right, every year inflation is getting increased. Inflation is there, right? Now 5 years back for a treatment cost जो भी था, आज के डेट में द ट्रीटमेंट कॉस्ट ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल हो चुका है, राइट? एंड दिस इज गोइंग टू इंक्रीज इन नियर फ्यूचर ऑल्सो, ये फ्यूचर में भी बढ़ेगा, बिकॉज मेडिकल इन्फ्लेशन इज ऑलमोस्ट 14%. मेडिकल इन्फ्लेशन इज ऑलमोस्ट 14%. मतलब आज जो जिसका कॉस्ट 100 रुपीज़ है एज एग्जाम्पल, नेक्स्ट ईयर उसका कॉस्ट होगा 114 रुपये, राइट? सो नाउ आपका जो पॉलिसी है, ठीक है, वो पॉलिसी का भी एक बहुत अच्छा फीचर ऐसा होना चाहिए जहाँ पे टाइम के साथ आपका सम इंश्योर्ड जो है, जो आपने सम इंश्योर्ड बेसिक जो पॉलिसी लिया था, मान लीजिए 10 लाख का, वो टाइम के साथ कैसे बढ़ रहा है. बिकॉज आज के डेट में जो कॉस्ट है, कल के डेट में 5 साल बाद उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगा. सो उसका आप कवर अप कैसे करेंगे? सो वी हैव अ प्रोडक्ट कॉल केयर सुप्रीम, जहाँ पे आपको 600% का बोनस मिलता है. मतलब आज अगर 10 लाख का पॉलिसी आपने लिया है, ठीक है, आफ्टर 5 years दैट पॉलिसी विल बिकम 70 lakhs विदाउट एनी एक्स्ट्रा प्रीमियम. सो दिस इज द यूनिक पॉइंट वी हैव इन केस ऑफ केयर सुप्रीम, एंड क्लाइंट कैन combat, client can take care of the high inflation in medical treatment fields, right? So that is one point. Number two, our premium. I won't say we are the lowest or something like that, but if you look into the benefit of the products, the premium is very much affordable. People can afford the premium. That is one of the best part. And third, we have a very large network, pan India. So client can have cashless benefit more frequently in case of care, right? If you ask me, if you ask me 3 points, let me tell you another 1-2 point that is also unique for care. We have recharge options. Recharge options means, suppose you have 5 lakh sum insured or 10 lakh sum insured. If that got exhausted somehow, राइट, ख़त्म हो गया वो, मान लीजिए हॉस्पिटलाइजेशन हुआ, आपका 5 लाख का पॉलिसी था, 5 लाख ख़त्म हो गया. सो कंपनी अगर नेक्स्ट कोई हॉस्पिटलाइजेशन आपका होता है, कंपनी फिर आपको 5 लाख देगा केयर सुप्रीम में, राइट? फिर आपको 5 लाख रुपया आपके पॉलिसी में रिचार्ज करके देगा विदाउट एनी एक्स्ट्रा प्रीमियम, राइट? सो वी हैव अदर बेनिफिट लाइक, हर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में आप देखोगे कि हॉस्पिटल डिडक्ट सम मनी फॉर कॉटन, ग्लव्स, नीडल्स, राइट? वो पैसा कटता है, कुछ पैसा 4, 5, 6, 7 ऐसे कुछ पैसा कटता है. बट केयर सुप्रीम में वी हैव अ ऑप्शन फॉर केयर शील्ड. अगर आप इफ़ यू आर ऑप्टिंग फॉर केयर शील्ड, देन ये जो नॉन कंज्यूमेबल आइटम का जो कॉस्ट होता है वो भी बहुत ज़्यादा, मतलब जो कट होता है दैट विल बी लेसर. सो देयर इज लॉट ऑफ यूनिक बेनिफिट्स, आई मस्ट टेल यू. So I told you few. That's all. And sir, one more question from my another partner, another agency, Mr. Chalamba. Yes. Hello, sir. I am Chalamba. I am the agent for the Care Health Insurance. I am the new agent. The selection from 1st of April. So I want to ask a question that how to accept within the 3 months. How to achieve bonanza price, Okay. cash price, Right. or something, say 15 lakhs ki price target. Yeah. Fine. I'm giving you a simple solution. Very simple. See, if you are targeting 15 lakhs for 3 months, right? So, what is your name? You told me. Mr. Chalamba. Chalamba, right? Am I right? Chalamba is okay. Yeah. Okay. Chalamba, in case of health insurance industry, normally average premium 20 to 30,000 का आता है, 20 से 30 हज़ार के बीच में प्रीमियम आता है, right? So if you want to achieve 15 lakhs in 3 months, you need to you need to divide 15 lakhs with 30. Per premium, per
person, average premium 30,000. So if you need to do 15 lakhs, and how many policies you need to do? 15 divided by 30. So 50 policies. Am I right? If you do 50 policies in 3 months, then you will achieve 15 lakhs. Right? On an average, customer used to give a premium of 20 to 30k. 20-30 हज़ार का प्रीमियम कस्टमर आपको देता है, एवरेज प्रीमियम. किसी का 50 भी होता है, किसी का 15 भी होता है, बट एवरेज आपका 20-30 हज़ार का प्रीमियम आ जाता है 10 लाख सम इंश्योर में. तो इफ़ यू वांट टू अचीव 15 lakhs in these 3 months, then you need to do 50 policies. Am I clear in this? 3 महीने में आपको 50 पॉलिसी क्लोज करना है. अभी 50 पॉलिसी क्लोज करने के लिए इंश्योरेंस का जो टर्म है, आप अगर 10 क्लाइंट के पास जाओगे, ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी उसको समझाने के लिए, तो वहाँ से 2 से 3 क्लाइंट आपका क्लोज होगा, मतलब दे विल ऑप्ट फॉर अ पॉलिसी, दे विल अप्लाई फॉर अ पॉलिसी. सो सिंपल है, 10 में से 3 आपका क्लोजर होगा. इफ़ यू आर मीटिंग 10 पीपल, देन 3 पीपल विल कम टू यू. दिस इज अ स्टैटिस्टिक्स ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री यू कैन से, और सेल्स का जो टैक्टिस होते हैं उसमें 10 अगर आदमी से आप मिलते हो तो 3 पॉलिसी आएगा. सो 50 पॉलिसी अगर आपको करना है, देन हाउ मेनी पीपल यू हैव टू मीट? 10 में 3, ठीक है. सो टोटल 350. 16 इंटू 10. आप अगर 10 में 3 पॉलिसी, मतलब 160 पीपल यू आर मीटिंग इन दिस 3 months ऑफ टाइम विथ हेल्थ इंश्योरेंस. 160 आदमी के साथ अगर आप बात कर रहे हो, ठीक है, 30% का क्लोजर रेट है, राइट. सो 160 पीपल इफ यू आर टॉकिंग अबाउट हेल्थ इंश्योरेंस, 30% के हिसाब से यू विल हैव 48-50 पॉलिसी, एंड आपका 15 लाख कंप्लीट. सो इफ़ यू आस्क मी, सर हाउ टू अचीव दिस बिग कार्निवल, ये 15 लाख का जो प्लानिंग है, इज़ वेरी सिंपल. आप 3 महीने में 160 आदमी के साथ मिलो. Sir? Got my point? Yeah, I got it. You meet 160 people, your 15 lakh will be done. Sir, I want to add a question. That in Manipuri, so most of the people are living in the rural area. When we say that 20 amount for premiums, then they say that it's very sometimes they maybe say it's huge, or they are neglected. They say, or You mean to say how to make confidence 20,000, 30,000 premium is not affordable for them, yeah. right? Wow. So Chalamba, let me tell you one thing. देखो, in India we have 130 crore of people. Almost 130 crore of people is there in India. But if you talk about insurable populations means जो प्रीमियम पे कर सकते, everybody cannot pay the premium. You need to understand this, right? So out of 130 crore people, according to data, मोटा मोटी 50,000, there is 130, so 50 crore people can pay insurance premium. So insurable population is around 50 crore, right? So you need to understand one thing, everybody cannot afford the health insurance, not possible. That's why government has launched lot of schemes like Ayushman Bharat, state-wise health insurance scheme for the people who is not very much sound financially, right? So you need to find out of people. It's not that every people will have health insurance from you. You need to find out of people who is capable of paying a premium, and that type of people are there in the society. Are you understanding my point? If you think everybody, village people, everybody will have health insurance policy from you, that is not possible, because premium matters, earning matters, and that's why government has given lot of schemes like Ayushman Bharat and all. So everybody cannot have health insurance because of financial constraint. So you need to find out of people, as I told you. Let me give you one statistics also. As I told you, out of 130 crore people, only 50 crore people can afford health insurance, who can pay the premium. Out of this 50 crore, even only 11-12% people got insured. Rest people either underinsured or not insured. So you will find huge number of people who is capable of giving premium, still they don't have health insurance policies, or they have a
maybe 1 lakh sum insured, 2 lakh sum insured, which is actually no point to have that type of policy. So focus on the people who can pay the premium. Everybody cannot pay the premium. We don't need to regret ourselves when we say to our people. Yes, sir. Last question, sir. Give us the message to the youth जिन्होंने गवर्नमेंट का जॉब नहीं किया, जिसको गवर्नमेंट का जॉब करने का जो अपॉर्चुनिटी नहीं मिला. So message to the unemployed youth and the youth of the people, youth of the Manipur. See, first of all, let me tell you, overall insurance industry is growing like anything, and specifically health insurance. Right? So job means it's not about government job only. Job means job. Wherever you will do hard work, you will earn good handsome money. And let me tell you one thing, in case of private sector is growing very fast, insurance sector is growing very fast, health insurance sector is growing very fast, and youth of Manipur has got huge opportunity to earn and huge opportunity to build their career in this insurance sector, because insurance is such sector which actually help the nation to grow, right? And let me tell you all, so if you didn't got government job, right, doesn't mean that your life ends here. So everybody in India, how many percent do the government job? Only 3-4%. So rest people are working in private sector and building their career, right? In Tata, in Birla, in other companies. So they are all private sectors, Reliance. So here in insurance also, I will request all the youth of Manipur, focus on insurance that helps the society, right? That helps to build the society, because insurance is the, if you can look into government initiatives, government has taken a lot of initiatives in insurance sector, because that is a social security. So I will request all the Manipur youth, come and join insurance sector as manager, as partner, as HP, right? That will give you a superb career in future. You can have a great career, right? So I will request not to waste your time looking for other things. Concentrate on this sector if you want, and this sector will give you growth and money both. Yes, थैंक यू आशीष सर, आपका वैल्यूएबल कुछ जानकारी, कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ एक्सपीरियंस हमारे युवा लोगों के साथ शेयर करने के लिए. सो दिल से आपका भारी अभिनंदन. थैंक यू आशीष सर. सो हैव ए warm and speedful, successful life in our health industry, Care Health Insurance. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you.